अब सब्जी बनकर तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और भुनी हुई कसूरी मेथी डालें। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे रोटी पराठा के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।